All right, so this will be equal to -1. We brings that to this side, and now what do we have? We have a negative sign. Why is that important? Because this is telling me what quadrant my angle would fall in. Because it's negative for sine, my angle falls in here. I know the quadrants now. So remember senior cat. That's what you have to know for these questions. Simplify, we have simplified it. Range, we already know the range. It's saying -180 to +180. So there are going to be two angles here. One is this angle and one is this angle. Okay. Then they're saying, okay, you have quadrant. We already found the quadrant. Alpha, we are going to do that. So alpha is going to be sine inverse of 1 over square root 2. Notice that I did not use the negative sign here because I don't need it. All I need to know was the angle. And I found it. My angle is going to be 45. Yep, 45 degrees. So that means this is 45 and this is 135. Why? Because 180 minus that. And that will mean my theta is -45 and -135. Because I have to measure it counterclockwise and clockwise because 360 tak nahi jana. इस range में रहना. Find the equation of curve which has a gradient of 4. Gradient हमें मिल गया. This gradient is dy by dx at this point. Okay, so we know the curve as well, and such that this is this. All right, so the first thing we should do in a question like this is to find dy by dx and put it equal to something. So I know that this thing d square y is double derivative. So if I integrate double derivative, I will get simple derivative, and that is same as differentiating this side. So integrating this side. So when I integrate this, this becomes 5x plus e power 2x over 2. Okay, plus c. And this is equal to dy by dx. Now I know that the gradient is 4 at this point. So I plug it all in. 4 is equal to 5 into 0 plus e power 2 into 0 over 2 plus c. So that's going to give me 4 equals 1 over 2. So c is 7 by 2. Okay, so I found c, and I want to find y. So I'm still not there. I have found dy by dx. So dy by dx now is 5x plus e power 2x over 2 plus 7 by 2, but not y. So I'll take integration again. So I'll integrate it again because I want to find y. So y comes out to be 5x squared over 2 plus e power 2x over 4 plus 7 over 2x. क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? Because this is x with power 1, so 1 plus 1 is 2, 2 divide कर दिया. Similarly, this one is e power 2x over 2. The derivative of e power 2x is 2. Just the 2x is 2. उसको मैंने divide करवाना है, तो 2 times 2 is 4. Similarly, here x power is 0. उसमें एक add कर देंगे तो x power 1 बन जाएगा. Plus c again, because this is a different kind of c. But I know my point now, 0 and -3. So मैं यहाँ पे -3 plug in कर देता हूँ. ये 0 हो जाएगा, ये e power 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा. So that tells me that -3 minus 1 by 4 is equal to c. That is c, and now my y is going to be 5x squared over 2 plus e 2x over 4 plus 7 by 2x minus 3 whole 1 by 4. और ये मेरा final answer. Sir, I don't understand why we had to integrate it for like a second time. Because over here we have the derivative. We don't have y. The question asks us to find y. Equation of the curve मतलब y is equal to something. हमारे पास dy by dx था. So to find y, we had to integrate it again. The idea here is that integration is antiderivative. All right. On the axis below, sketch the graph of y equal to 6 minus 3x. All right. So what I'll do is I will start by finding out the y-intercept and the x-intercept of this line. Y equals 6 minus 3x. That's it. I will not use the modulus in the beginning. So 6 minus 3 means that for every 1 increase in y, in x, it decreases by 3 in y. So इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका x intercept होगा. ठीक है? So now my line is going to be this. ये मेरी line बनेगी. ठीक है? I can just draw it like that. Now the problem with this line is that this is not incorporating the modulus.
So when I have to use the modulus, all I have to do is reflect the part that is below the x-axis. So below the x-axis is the right part, ये वाला portion. इसको मैं reflect कर दूंगा और मैं कहूंगा कि यहाँ पे 12 तक चला जाएगा. That's it. ठीक है? तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या होगा कि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा. This gets deleted and just this part remains. ठीक है? And that's my graph. So all I had to do was find out my y-intercept and x-intercept and then reflect the part that was below the x-axis. Reflect करने के लिए all you need is just one point. मुझे y-intercept पता चल गया 6 था फिर 2 किसका x-intercept भी निकालेंगे. So I put y is equal to 0. If you put y is equal to 0 and solve it for x, so 0 equals 6 minus 3x, so x equals to plus 2 aa jata. Now they're saying solve this. Now there are multiple ways of solving this. I'll show you both of them. Two methods. First method is that you take modulus on both sides. It is there. So you take square on both sides. क्योंकि modulus क्या करता है? आपको आंसर पॉजिटिव करके देता है और स्क्वायर भी यही करता है कि आपको आंसर पॉजिटिव करके देता है. तो हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड्स पे. तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर बनेगा 36 minus 36x plus 9x squared is equal to 4. So that gives me 9x squared minus 36x plus 32 is equal to 0. And this I can solve using algebraic formula or any of the other methods that I know of. So this will give me, I'm going to use a calculator for this, but when you do it in the exam, you need to show your steps, okay? So this will give me x equals to 8 by 3 and x equals to 4 by 3. So two answers here. So that's one method, that you take square on both sides and you solve the quadratic equation. The second method is that you use the definition of modulus. Modulus की definition क्या होती है? Modulus ये कहता है आपने अभी ग्राफ बनाया है इसका, ठीक है? ये आपने ग्राफ बनाया ना. So इस ग्राफ को अगर हम देखें और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे ग्राफ के दो पार्ट्स हैं. एक वो पार्ट है जो कि 2 के राइट साइड पे, एक वो पार्ट है जो 2 के लेफ्ट साइड पे. ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि 6 minus 3x modulus is same as 6 minus 3x for x less than 2 and 6 minus 3x whole multiplied by minus 1 for x greater than 2. क्योंकि आपने उसको रिफ्लेक्ट करना है, the reflected part is always multiplied by minus 1. तो हमारे पास दो आंसर बन जाएंगे. एक होगा कि 6 minus 3x equals to 2 और एक बन जाएगा minus 6 minus 3x equals to 2. ये दो आंसर्स बन गए, इसको हमने सॉल्व कर देना है. ठीक है? So when you solve this thing, you get 6 equal to 2 plus 3x. So 4 over 3 is equal to x. और ये बन जाएगा minus 6 plus 3x equals to 2. So 3x equals to 8. X equals to 8 over 3. Two answers. Now, if you want to verify कि ये मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है, तो all you have to do, कैसे होगा? क्योंकि देखो 6 minus 2 हो जाएगा ना. ओह ओके ओके. या अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो कि मैंने आंसर ठीक किया है कि नहीं किया, तो आपको पता है कि इक्वेशन थी 6 minus 3x equals to 2. तो यहाँ पर y की वैल्यू आती है, तो आप y equals to 2 पे एक लाइन बना दो, तो y equals to 2 ये बनता है. यहाँ पे आप एक लाइन बना दो तो आपको नजर आ रहा है कि हमारी लाइन किस तरह से कनेक्ट हो रही है. देयर इज अ वैल्यू हियर बिटवीन 1 and 2 एंड देयर इज अ वैल्यू हियर बिटवीन 2 and 3. ठीक है? तो हमें यहाँ से ग्राफ से ही पता चल रहा है उसका. ऑब्वियसली एग्जैक्ट पॉइंट तो हमें ग्राफ पे नहीं मिलेगा, हमें विल हैव टू सॉल्व इट, बट वी कैन वेरीफाई एटलीस्ट द रेंज ऑफ दीस पॉइंट्स. तो हमें यहाँ से ये मिल गया. नेक्स्ट इट्स सेइंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच 6 minus 3x मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन 2. तो आप ग्राफ को देखो. इस क्वेश्चन में फायदा ये है कि आपके पास ग्राफ गिवन है. सो ट्राई टू रिलेट ग्राफ टू योर अंडरस्टैंडिंग. इट्स सेइंग 6 minus 3x, the blue line in here, is greater than 2. 2 is the black line. So for what values is this greater than 2? एक ये वैल्यू है 4 by 3 और एक ये वैल्यू है 8 by 3. 8 by 3 इस रीजन में यहाँ पर ब्लू लाइन नीचे है, ब्लैक लाइन ऊपर है. x equals y is equal to 2 वाली लाइन ऊपर है और ब्लू वाली लाइन नीचे है. बट इसके बाद it actually supersedes it. So we will say that for region where x is greater than 8 by 3, that is where it is.
and x is less than 4/3, that is where our blue line, the modulus wali line, is above the black x y is equal to 2 wali line. ठीक है, हमें यहाँ से पता चल गया. अगर आपने ये नहीं करना तो आप ऑब्वियसली उसको ग्राफ करके अपने तौर पे दोबारा देख सकते हैं. अगर आपने वो भी नहीं करना है तो आप कोई वैल्यूज प्लग इन कर सकते हैं. आप कह सकते हो कि अच्छा नंबर लाइन ले लेते हैं हम. नंबर लाइन पे एक पॉइंट है 4/3, एक पॉइंट है 8/3. 4/3 के पीछे कोई भी पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज 0 ले लेते हैं. 4/3 और 8/3 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज 2 ले लेते हैं. और इनके आगे कोई भी पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज 4 ले लेते हैं. अब इस इक्वेशन में आपने उसको इनइक्वालिटी में प्लग इन करना है. 6 minus first value that we were going to pick was 0. So 6 minus 0 modulus is greater than 2. Is this true or is it not? It is true, right? So we'll say कि ये region true है. अच्छा. Second value that we had to pick was 2. So 6 minus 3 times 2 modulus greater than 2. ये बन जाता है 0 greater than 2. 0 is not greater than 2. तो ये false है. This is where the inequality does not hold. फिर हम इस साइड से कोई भी ले लेते हैं. 6 minus 3 into 4 modulus greater than 2, ये बन जाता है -2 modulus greater than equal to 2. So हमारे पास ये हमें सॉरी ये 3 times 2 है ना, 3 times 4 है तो ये -4 बन जाता है, -4 modulus. तो ये 6 is greater than 2 आ जाता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी ये ट्रू है. तो हमें नजर आ रहा है कि हमारी ग्राफ जो है इसमें दो रीजन हैं where the inequality is true and one region where it is not true. तो हमने इस तरह से उसको शो करवा दिया. So multiple ways of solving inequalities, all of them are valid. Alright, find the derivative of this when x equals to 0.3. First you do this part and then you plug in the values. Remember that. आपने direct values नहीं plug in कर देनी. So हम इसको देखते हैं. Y equals to x cube ln 2x plus 1. Now, as I've told you before, if you have a situation like this, you break it down into two functions. One is u, one is v. So if you write m, u is this, v is ln 2x plus 1. Now it's really easy to find u prime, यानी कि u का डेरिवेटिव वो बन जाता है 3x squared. क्यों? 3 मल्टीप्लाई होगा और पावर में से -1 हो जाएगा, and you'll get 3x squared. Similarly, if you want to do this, यहाँ पर हमें पता है कि log के डेरिवेटिव क्या होता है कि जो भी चीज होती है वो डिवाइड कर देते हैं. And then we multiply it with the derivative of this thing. Remember, chain rule हर क्वेश्चन में लगता है, चाहे वो log है, चाहे वो trig है, चाहे वो algebra है, चाहे वो exponential है. chain rule हमेशा अप्लाई होता है. chain rule ये कहता है कि you keep on taking derivatives until you get to x. अभी हम x तक नहीं पहुंचे, हमने सिर्फ log को देखा है. So to take care of the x part, this whole part in the middle, you multiply it by the derivative of this. So what's the derivative of 2x plus 1? It is 2. So my final answer is going to be 2 over 2x plus 1. And now I will write my formula again. So y prime is u v prime plus v u prime. Prime का मतलब है derivative. तो मैं यहाँ पे plug in कर देता हूँ. u is x cube, v prime is 2 over 2x plus 1 plus v is ln 2x plus 1 and v u prime is 3x squared. तो ये मेरे पास final answer मिल गया. इसको अगर simplify करना भी चाहो तो that's fine. Now they asked us to find it when x equals to 0.3. So now we will put it at x equal to 0.3. So 0.3 whole power 3, 2 over 2 into 0.3 plus 1 plus ln 2 into 0.3 plus 1 plus multiply by 3 into 0.3 squared. And you just plug it all in the calculator and you will get your R. I'm getting 0.161. अब मेरे पास ये डेरिवेटिव मिल गया है. Next is saying find the approximate increase in y when x increases from 0.3 to 0.3 plus h. ठीक है. So what is the change in x? Delta x, small change in x is h. So पहले मैं plug in कर लेता हूँ कि 0.3 पे y की क्या वैल्यू है. ठीक है. So 0.3 पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं. So y is going to be x cube ln 2x plus 1. So हम यहाँ पे 0.3 plug in कर देते हैं. 0.3 cube ln 0.3 into 2 plus 1.
So when we do that, we get 0.0127. ठीक है, तो अब हमें ये कह रहा है ये कि dy by dx is equal to small change in y divided by small change in x. तो आपको ये small change देखना है. So what is your dy by dx? अच्छा, हमें ये y की वैल्यू की जरूरत नहीं थी इसमें. We don't really require it. dy by dx is 0.161. डेल्टा y हमें नहीं पता, डेल्टा x h है. ठीक है, तो डेल्टा y is equal to 0.161 h. h क्यों है? क्योंकि that is the change from x. तो हमें यहाँ से मिल गया. Seventh term in the expansion of this thing in ascending powers of x is this. It is given that a and b are positive constants, show that b is equal to 1 over a. हमें जो information given है, that is about the seventh term. So term number 7. Let's try to figure that out. Term number 7 means r is 6. Remember that. Term number is always one ahead of the power. So it's going to be 12c6 a power 6 bx to the power 6. हमें एक हिंट भी यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि उसने ये बता दिया है कि x की पावर क्या है, तो हम इसको इक्वल टू 924x पावर 6 लिख देंगे. When you solve this 12c6 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, that is 924. So 924 a power 6 b power 6 x power 6 equals to 924 x power 6. This cancels out, this cancels out. You're left with a power 6 b power 6 equals to 1. So इसका मतलब हुआ कि I can simply take a power 6 equal to 1 over b power 6, and if I take the sixth root here to get rid of power 6, I'll end up with a is equal to 1 over b, which I've shown. Next is saying the sixth term in this expansion is 198x power 5. Value of a and b निकालें. तो sixth term मतलब term number 6 यानी कि 12c5 a to the power 7 because 12 minus 5 is 7 bx to the power 12 minus 5 basically ये जो नंबर होता है यहाँ पे आ जाता है is equal to 198x power 5. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 12c5 क्या बनता है using a calculator? We get 792. This cancels out and you're left with a power 7 equals 198 b power 5 भी कर लें over 792. अब हमें पिछली इक्वेशन से पता है कि a is 1 over b, तो हम यहाँ पे वो प्लग इन करते हैं कि 1 over b power 7 b power 5 is equal to 198 over 792. This cancels out a little bit, gives you 2. So 1 over b squared is equal to 198 over 782. Sir, which is 1 over 4. I don't know. अगर simplify करें. अगर इसको simplify करें, इसका square root लेना होगा और 1 over that gives me 2. I'm getting 2 for some reason. ठीक है? अच्छा, एक मिनट फिर करती हूँ. देखें, 1 over b square is roughly equal to 1 over 4. ये roughly equal होता है because 198 into 4 is 792. हाँ, 792 और ये तो 1 over 4 बन गया ना. So what is Yes, b? sir. अब इसका square. b is equal to 2 and minus 2. अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्वेश्चन में कहीं पे उसने कहा है कि a और b पॉजिटिव है, उसने कहा है कि वो पॉजिटिव है, तो we will ignore the negative values. We'll say b is 2. So what is a? A is 1 over b. So a is going to be 1 by 2. So आपका final answer है a is 1 by 2 and b is 2 because you're rejecting the negative value. Sir, why are we rejecting the negative value? Because it said in Because the question. that a and b are positive constants. Find d by dx, d by dx of this thing. For this you have to notice that there's a power 2 by 3 over there. So first thing you should do is multiply it by that power and then subtract it. So 2 by 3 minus 1. Now multiply it by the derivative of the inside thing because we are not still at x. We have only taken care of this whole power. तो x तक जाने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा. So 10 times x minus 0. Okay. So that tells me 2 by 3, 5x square minus 125 power minus 1 by 3 into 10x. तो मेरा फाइनल आंसर बन जाता है 20x over 3 into 5x square minus 125 power 1 by 3.
आपकी मर्जी, आपने लिखना है या नहीं लिखना, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको हम अगले में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे हमें देखें, उसने कहा है कि इंटीग्रेट दिस होल पोर्शन। ये क्या है? दिस इज सरप्राइजिंगली वेरी सिमिलर टू दिस थिंग। The only difference is that it doesn't have 20/3 in there. तो अगर 20/3 यहाँ पे हो जाए तो ये हमारे पिछले क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 20/3 मिसिंग है ना, तो मैं 20/3 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो 20/3 x into 5x squared minus 125 whole power minus 1 by 3 dx. And this looks surprisingly like this whole thing, the one that we just had. Problem is कि 20/3 मैं अपनी तरफ से ला नहीं सकता, तो मैं 3/20 से उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दैट वे ओवरऑल मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर मैंने 20/3 से अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाय मैंने उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हिच मींस ओवरऑल आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 फॉर्म ऑफ 1। एंड नाउ दिस पोर्शन, दिस होल पोर्शन, I can simply say that this is equal to this. So I'll be like, okay, this is equal to 3/20 into 5x squared minus 125 power 2 by 3 plus c obviously. ठीक है? c नहीं भूलना आप. Hence find So the that's limit. it. Yeah, that's it. You had to use that point. You did not have to integrate it yourself, which by the way you cannot even if you try in add maths. How do we do this? We study that in A2 for a question like this situation. Okay? Okay, sir. Yeah, but if you take, usually in most schools, they introduce it in AS, although syllabus wise वो A2 का topic. Next is saying apply the limits. So just take this thing and apply the limits. So 320 into 5x squared minus 125 whole power 2 by 3 है. इस पे लिमिट्स अप्लाई कर दें। अब आपने c नहीं लिखना क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं। So when you apply the limits, you get 3/20 here, 5 into 10 squared minus 125 whole power 2 by 3 minus 5 into 6 squared minus 125 whole to the power 2 by 3, और इसको हम कैलकुलेटर में ऐड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। We'll leave this question out for now. This is no longer in the syllabus. All right, remain effective. The polynomial this is divisible by x plus 3. हमें पता लग गया कि x plus 3 is a factor. ठीक है, it is given that p prime of 0 is 36 and p double prime of 0 is 86. Okay, ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। तो सबसे पहले तो मैं इसको x plus 3 से डिवाइड करता हूँ। इसका मतलब है p of -3 is equal to 0. इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये बनता है कि p of -3 is 0. So I put that in there. So a into -3 cube plus b into -3 squared plus c into -3 minus 9 is equal to 0. So minus 27a plus 9b minus 3c minus 9 equal to 0. That's my first statement. Second one is p prime is 0. P prime of 0 is 36. So p prime में यहाँ पे करता हूँ, हो जाता है 3ax squared plus 2bx plus c and this is equal to 36. If I put x equal to 0, so जब मैं x equal to 0 plug in करूँगा तो ये बन जाएगा 3a into 0 plus 2b into 0 और c equal to 36 बन जाएगा। My third statement was p double prime is 86. ये मेरा p prime है, मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। So ये बन जाता है 6ax plus 2b and this is equal to 86 if I put x equal to 0. So 6a into 0 plus 2b is 86. So this whole becomes 0. 2b is 86. So b is equal to 43. अब देखेंगे मेरे पास c है, मेरे पास b है. I put it all back into my first equation. So minus 27a plus 9 into b minus 3 into c minus 9 equal to 0. And I'll just solve this. तो मेरे पास बन जाता है. Sir? Yes. Sir, I didn't understand how we got p prime. डिफरेंशिएट किया मैंने उसको. p प्राइम का मतलब है डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट किया. ax क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर -1 हो जाएगा. So this gives me minus 27a plus 270 equal to 0. So a is equal to minus
सॉरी प्लस 10 वो यहाँ से मिल गया, तो ए बी और सी तीनों मिल गए। ठीक है, वी जस्ट हैड टू इफेक्टिवली यूज द इंफॉर्मेशन दैट वी वर गिवन। यूज योर वैल्यूज, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 2x minus 1। पहले मैं वैल्यूज प्लग इन कर लेता हूँ। तो a 10 है तो इक्वेशन बन जाएगी 10x cube, b is 36, so b is 43, so that will be plus 43x squared, plus c is 36, so 36 sorry plus 36x minus 9. This is my p of x now. So when I'm dividing by 2x minus 1, so 2x minus 1 equal to 0, x equal to 1 by 2. So p of 1 by 2, and you apply it in a calculator, तो हमें मिल जाता है आंसर जो भी मिलेगा। a plus 4 cos bx मिल गया हमें। The diagram shows the part of the curve this when we are positive constant, the curve में ये वो सारा कुछ a और b निकालना है। बेसिकली हमें उसने ग्राफ दे दिया और हमें कहते हैं इसका आंसर निकाल दो। तो सबसे पहले मुझे पता है कि I will apply the map technique on this. Midline, amplitude and period. Midline यहाँ पे क्या है? Midline, as you can see, the graph is going नीचे, काफी नीचे तक, और ऊपर ये 6 तक आ रहा है। मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे 4 amplitude पता है। तो all I have to do is make sure कि मैं 6 से 4 steps नीचे जाऊं, तो वो बनता है +2। तो मिडलाइन मेरी +2 बन जाएगी। दूसरा मुझे पीरियड का पता करना है। अब वो कहता है कि वो π/6 पे पीरियड को x को कट कर रही है, तो मुझे नहीं पता, और m का भी नहीं पता, मुझे पीरियड नहीं पता यहाँ से। तो मैं इसको यूज करता हूँ, whatever I have here, midline is a, तो ये a के बराबर हो गया, मेरे पास ग्राफ बन गया a is equal to 2, और मुझे अब फाइनल वैल्यू मिल गई y is equal to 2 plus 4 cos bx, और हमें पॉइंट मिला हुआ है। So I'll just plug that in there, 2 plus 4 cos b into π/6, and you will get your answer for b. So you just applied there, minus 2 over 4 is equal to cos b π/6. Now that is a negative value, तो हमारे पास cos यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, और हम cos इनवर्स ऑफ हाफ निकालेंगे, वो इक्वल टू अल्फा होगा, तो वो बन जाता है 60 degrees. So that's 60 degrees. This is radians, हाँ, तो मैं इसको radians में कर लेता हूँ. This is π/3 radian. Okay, so when you do it here, if this is π/3, this becomes 2 π/3. So that means my angle B π/6 is 2 π/3, giving me the final value that B is equal to 4. So I got B, I got A, that's all I needed. So my equation now becomes 2 plus 4 cos 4x. Use your value to find the exact coordinates of P. P kya tha? P is the point where it cuts the x-axis. So again, you put 2 plus 4 cos 4x equal to 0, but you don't really have to do it because आपने देखे यहाँ पे already निकाला हुआ है इसको, ठीक है? तो आप कहेंगे कि ठीक है, my other point where it is equal to 0 is going to be pi plus π/3, which is 4 π/3. हमें यहाँ से बोलेगा क्यों? क्योंकि देखें आप सारा वो प्रोसेस करेंगे जो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है? And you have π/3 here, π/3 here, so that's your point. This whole thing, 4 π/3. The exact coordinates of m. M कौन सा point है? M is the minimum point, यानी कि जहाँ पे डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 plus 4 cos 4x का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन 4x मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारा डेरिवेटिव है। क्यों? 4 ऐसे कैसे रहेगा? 2 का तो डेरिवेटिव 0 होगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और फिर जब 4x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0 देयर. So that tells me minus sine 4x equals to 0. So मेरे पास आ जाते हैं मल्टीपल आंसर्स. एक आंसर मेरे पास बन जाता है कि sin of 4x equal to 0. कोऑर्डिनेट देखेंगे
हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होता है? साइन एक्स यहाँ पर हो सकता है, देखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 0 करते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है पाई, आई थिंक एक 0 में बनता है और एक यहीं पे बनता है। सो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा 0 या 360 2 पाई यानी कि। सर सो या सर 4x को आपने 0 क्यों लिखा है? मैंने साइन इनवर्स ऑफ 0 लिखा है और ये 0 रेडियन मिल रहा है मुझे। दैट इज माय अल्फा। 4x नहीं निकाल रहा हूँ मैं अभी। ओके हाँ, तो 0 होगा या 2 पाई होगा। तो आई विल से 4x इक्वल टू 2 पाई, सो x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो मेरे पास आंसर आ गया, पाई बाय 2 इज माय आंसर है फॉर m। सो माय m इज गोइंग टू बी पाई बाय 2 एज माय x वैल्यू, और y वैल्यू के लिए मुझे इसे प्लग इन करना पड़ेगा 2 प्लस 4 cos 4x में। तो जब मैं ये करता हूँ, cos ऑफ 2 पाई 1 होता है मेरे ख्याल से, तो ये मेरे पास 6 बन जाता है। वेट अ मिनट, लेट मी सी। सर इसका आंसर 6 ही आ रहा है। आई नो 6 आ रहा है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए ना, नेगेटिव में आंसर होना चाहिए। सर जिस तरह आपने वो तो देखा है कि मिड लाइन और 6 में 4 का डिफरेंस था, तो सबसे नीचे भी उसका 4 my का bad, डिफरेंस नहीं होगा? मुझे समझ आ गया, यहाँ पे 0 रेडियन नहीं पाई रेडियन होना चाहिए, जिसका मतलब है ये इक्वल टू पाई हो जाएगा और ये पाई डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, एंड दैट्स वेयर आई वाज रॉन्ग। पाई रेडियन होना चाहिए क्योंकि अगर ये 0 है तो इसके इधर ये पाई रेडियन होगा। तो 4 इंटू पाई बाय 4 दैट गिव्स मी दिस, और मेरे पास फाइनल आंसर बनता है 2 प्लस 4 cos पाई, दैट इज, फिर यही आ रहा है, -2 आ रहा है सर। -2 आ रहा है। यस। और सर इसको हम एक और तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे? सर थ्रू द ग्राफ। नहीं, ग्राफ हम कैसे करें, हमें पता ही नहीं है। सर जिस तरह हमने 2 और 6 की डिफरेंस देखी है 4। अच्छा हाँ, वो हम कर सकते थे, यस यू आर राइट, मिड लाइन को देख के, बिल्कुल बिल्कुल, वी कुड डू दैट, बट देन वी वुडंट गेट एनी मार्क्स ना, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। But we could उसके check लिए that. हाँ, you could check using that, but you will have to show it using this method. Show that the area of the sector is given by this. आप लोगों ने कहीं जाना तो नहीं है? I am taking a few more minutes of your time. Sir, I have to go at 6:30. तब तक तो हो ही जाएगा. Yeah, we'll be free before that. Yeah, so we have to find the perimeter of the sector is 10. Perimeter 10 होने का मतलब है कि we know that radius plus arc length is 10. Okay, and what is arc length? Arc length is s equal to r theta, so it's going to be 2r plus r theta is 10. तो मुझे एक इक्वेशन मिल गई है फॉर r and theta, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसका सेक्टर एरिया निकाल के दें इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो मैं r को सब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। तो r मेरा बन जाता है, if I take r is common, this becomes 2 plus theta, which is equal to 10, and that looks surprisingly similar to what we have in the exam, in the answer here. Now what is the area? Area is half r square theta. ऐसे ही होता है आपका आंसर, ऐसे ही होता है ना? Sir, क्या मतलब? Sir, I didn't get your question. एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना होता है? इट इज हाफ r square theta, Yes. ठीक है ना? Yeah. Yeah, so we'll just apply all of that there, और hopefully हमें कोई आंसर इसका सेंस बन जाएगी। So this is going to give me half into 10 over 2 plus theta square theta, ठीक है, जो कि बन जाएगा 100 theta over 2 plus theta squared, 2 कैंसिल हो जाएगा, 50 theta over 2 plus theta whole squared. क्या 50 था या 500 था? सर 500 है? 50 है, नहीं, वो 50 50 थीटा था. ओह ठीक है। वहाँ 500 लग रहा था. It is given that theta can vary and a has a maximum value. A is your area by the way, ये हमें जो एरिया मिला हुआ है, ठीक है।
So 50 theta plus 2, ये सारे का सारा, find the maximum value. 50 theta over 2 plus theta whole squared is your area. So dA by d theta निकालते हैं और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी. तो इसको हम बना लेते हैं u और इसको हम बना लेते हैं v. So my derivative is going to be u v prime v u prime minus u v prime over v squared. तो v u prime कर लेते हैं. तो v है 2 plus theta whole squared into 50 minus u 50 theta into 4 plus 2 theta over v squared, which is 2 plus theta squared cos squared, and we want to put it equal to 0. Yeah, the clear है ना? I'm just plugging it in the formula. Yes, sir. So that gives me 50 into 2 plus theta whole squared minus 200 theta minus 100 theta squared is equal to 0. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 50 into 4 plus 2 theta plus theta squared. Let me divide it all by 50. So मेरे पास आसानी से ये बन जाएगा 4 plus 2 theta plus theta squared minus 5 theta minus 2 theta squared. ठीक है, तो मेरे पास फाइनल आंसर बन जाएगा minus theta squared minus 3 theta plus 4 equal to 0. जब अब इसको सर वो 5 थीटा नहीं होगा, वो 4 थीटा नहीं होगा. 50 से डिवाइड किया. अच्छा हाँ, 4 theta होगा. Yes. So I'm getting two answers. One is theta is equal to 1.24 and the other is theta is equal to minus 3.24. So I've gotten two answers for theta और यही हमें चाहिए था. Coordinate geometry. इसमें what we have to do is we have two lines, y is equal to this and y is equal to that. Find the coordinate of a point where the perpendicular bisector of AB intersects the line y is equal to x. So पहले हम perpendicular bisector की इक्वेशन निकालते हैं. उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए. सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि a और b क्या है, फिर मुझे a और b का मिड पॉइंट चाहिए, फिर वो मिड पॉइंट यूज करके वहां पे ग्रेडियंट चाहिए, उस ग्रेडियंट को यूज करके मुझे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन चाहिए, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन को यूज करके मुझे y इक्वल टू x में डालना. दोबारा से देखें, देयर इज अ कर्व, लेट्स सपोज ये कर्व है और देयर इज अ लाइन, लेट्स सपोज ये लाइन है, ये a है, ये b है. आई विल फाइंड द मिड पॉइंट. उस मिड पॉइंट पे ग्रेडियंट ढूंढूंगा, उसको यूज करके आई विल फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसकी ग्रेडियंट ढूंढेंगे, उसकी ग्रेडियंट और उसकी इक्वेशन ढूंढ के हम उसको फिर y is equal to x, y is equal to x की लेट्स सपोज ये लाइन है, ये y is equal to x है, ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को और ये पॉइंट हमें आंसर दे देगा. करके दिखा दूं या आ गया? सो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस फर्स्ट. सो y is equal to 2x plus 5 intersects line y plus xy equal to 5. So we put it all in there. So that gives me 2x plus 5 2 से डिवाइड अगर कर लें तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन जाएगी ये. When you solve this, you get two values. One is that x. अच्छा ये तो कह रहा है कि इंटरसेक्ट करेंगी. ये दो पॉइंट्स आ गए a और b. इनका मिड पॉइंट क्या होगा? -3 होगा x में ऑब्वियसली. ठीक है, तो मैं y पुट कर लेता हूँ वहां पे. तो y comes out to be 2 into -3 plus 5 -1. तो मेरा मिड पॉइंट आ गया -3 -1 और मेरे पॉइंट्स आ गए 0. x -3 किस तरह हुआ है? 0 और -6 का मिड पॉइंट -3 होता है. नो बट वेट, आई हैव टू फाइंड इट इन द a और b का मिड पॉइंट चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए. तो मैं पहले y निकालता हूँ यहाँ पे. y विल बी 2x plus 5. सो मैं यहाँ पे अगर इसको देखूँ x और y, x 0 है या -6 है. जब x 0 है तो y बनता है 5 और जब x -6 है तो y बनता है -7. तो दो पॉइंट्स आ गया बस. ये a है, ये b है.
इनका मिड पॉइंट निकाल देते हैं. 0 plus minus 6 over 2 minus 3 and 5 plus minus 7 over 2 minus 1. minus 3 और minus 1 मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए. ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए. तो पहले मैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल देता हूँ. ग्रेडियंट ऑफ ए बी विल बी 5 minus minus 7 over 0 minus minus 6. तो ये बन जाएगा 2. तो gradient of their perpendicular bisector will be, इसको flip करें और sign flip करें, minus half. You have a point M, you have the perpendicular bisector, you can find the equation. Y minus y1 equal to M x minus x1. ये बन गया हमारे पास फाइनल इक्वेशन. अब इसको y is equal to x से इंटरसेक्ट करवाना है. When this is equal to y is equal to x, so x equals to minus 1 by 2 x minus 1 by 2. So it becomes 3 by 2 x equal to minus 1 by 2. X equals to minus 1 over 3. ये हमारे पास x की पॉइंट मिल गया और y भी यही होगा क्योंकि y is equal to x है. तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन. That's it. That's your paper. Thank you.